जी अस्सलाम वालेकुम। अब सेशन में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं MCQs इसके F9 के। ठीक है। तो इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फर्म्स प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन अर्निंग्स, नहीं टू मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ एनुअल डिविडेंड्स, नहीं टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इट्स करेंसी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो सी इज द आंसर इन दिस केस, क्योंकि जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है कि जी वो हेल्प करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अच्छा जी। Question number two. Indicate by clicking in the relevant boxes whether the following objectives are financial or non-financial objectives of a company. अच्छा जी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट शेयर, नहीं ये नॉन फाइनेंशियल है। अर्निंग ग्रोथ, फाइनेंशियल है। अच्छा जी। सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ, फाइनेंशियल है। अचीविंग अ टारगेट लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नॉन फाइनेंशियल है। अचीविंग ए टारगेट लेवल ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, financial है। Which three of the following are the main types of decision facing the financial manager in a company? तो जी इनकम डिसीजन नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हाँ, डिविडेंड डिसीजन बिल्कुल, और फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल। बी सी डी जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका एम है कि वो इंश्योर करे कि पैसा अवेलेबल है, यानी कि मनी अवेलेबल है, ताकि वो फाइनेंस कर सके फाइनेंशियल प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में, और वो सिलेक्ट कर सके उन प्रोजेक्ट्स को जो कि जिनको अंडर टेक किया जा सके। एक दफ़ा प्रॉफिट जो है वो बनने शुरू हो जाए, डिसीजंस जो है वो होना शुरू हो जाए ऑनर्स के री इन्वेस्ट करने के लिए फ्यूचर के लिए। इनकम डिसीजन जो है वो सब डिविजन्स में आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। अच्छा जी। अप्रेजल डिसीजन जो है वो सब डिवीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के और बजट डिसीजन के। अच्छा जी। Which of the following is an example of a financial objective that the company might choose to pursue? Dealing honestly and fairly with customers on all occasions, provisions of good working condition and industrial relations, producing environmentally friendly products, restricting the level of gearing to below a specific target level। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है वो रिलेट करता है लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क से, और कंपनी जो है वो प्रिपेयर करेगी अदर ऑब्जेक्टिव जो है वो नॉन फाइनेंशियल है। वैल्यू फॉर मनी इज एन important objective for non-for-profit organization. Which of the following actions is consistent with increasing value for money? अच्छा जी। So, using a cheaper source of goods and thereby decreasing the quality of not-for-profit of organization services, searching for ways to diversify the finances of the not-for-profit organization, decreasing waste in provision of a service by not-for-profit organization, और फोकसिंग ऑन मीटिंग द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सी आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि वैल्यू फॉर मनी जो है वो रिलेट होती है इकोनॉमी से। वैल्यू फॉर मनी जो है वो इनपुट डालती है ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी डालती है, और इकोनॉमी रिलेट करती है विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। अच्छा जी। अब सी में आ जाए, यानी कि सिक्स में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट likely to fall within financial management? The dividend payment to shareholders is increased. Funds are raised to finance an investment project. Surplus assets are sold off, or non-executive directors are appointed to the remuneration committee. तो डी आ जाएगा। अच्छा जी। Indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statements are true or false. Financial management is concerned with the long-term raising of finance and allocation and control of resources. बिल्कुल। Management accounting is concerned with providing information for the day-to-day functions of control and decision making. बिल्कुल। Financial accounting is concerned with providing information about the historical results of past plans and decisions. ये भी ट्रू, तीनों ट्रू आएंगे इसमें। ठीक है। आगे चले जी। Which of the following tasks would typically be carried out by a member of the financial management team? इवेल्युएटिंग प्रपोज एक्सपेंशन प्लान। आगे पहले ही आपको सही मिल जाए तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। रिव्यू ऑफ द ओवर टाइम स्पेंडिंग एंड अप्रोप्रिएशनिंग ओवरहेड्स टू कॉस्ट एंड लाइफ,
unit is typically carried out by a member of the management accounting team. Depreciation of non-current assets is typically carried out by a member of the financial accounting team. ठीक है। आगे चलें जी। अगला, which of the following is an example of internal stakeholder in the company directors? चलो देखते ही पता चल गया। What is the main purpose of corporate governance? To separate ownership and management control of organization, to maximize shareholders value, नहीं, to facilitate effective management of organization and to make organization more visibly accounting to a wide range of stakeholders। बिल्कुल सही, क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंट्रोल होता है वो क्रिएट करता है सिचुएशन को जहाँ पे मैनेजर एक्ट करेगा एज एन एजेंट ऑफ द ऑनर्स। अच्छा जी, नंबर 12, सॉरी 11, agency problem is driving force behind the growing importance attached to a sound corporate governance। तो ये भी हमारा कस्टमर शेयर होल्डर मैनेजर सी आंसर होगा यहाँ पे 11। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप जिसका आपको मैंने बताया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मैनेजमेंट maximizing market share is an example of a no। shareholders wealth maximization is a primary financial objective for a company listed on, बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव सो दैट देयर अचीवमेंट कैन बी मेजर्ड, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, 14, which two of the following are the efficiency targets that a not-for-profit organization might put in place? Reduction of wastage of paper, सही है। Pay rates for the staff appropriation level, नहीं। Staff utilization, सही है। Managerial reward scheme should help ensure managers take decisions which are consistent with the objectives of shareholders। Which three of the following are the characteristics of a carefully designed remuneration package? Linking of rewards to change in shareholders' wealth, say, matching of managers' time horizons to shareholders' time horizons. B, a possibility of manipulation by managers, encouragement for managers to adopt the same attitude to risk as shareholders, like motivational to primarily achieve short-term goals। सही है, आगे चलें। 15, indicate by clicking in the relevant boxes which of the following are the typical criticisms of executive share option schemes? When directors exercise their option, they tend to sell the shares almost immediately to cash in on their profits। ये criticism है। If the share price falls when options have awarded and the option have no value, they cannot act as an incentive। ये भी criticism है। Directors may distort reported profits to protect the share price and the value of their share options। ये भी criticism है। अच्छा जी, directors of Portico, the PLC, have recently engaged a firm of consultants to negotiate standard terms of trade per one of the strategic business unit. This includes the agreement by Portico PLC to pay a 5% penalty on any late invoicement settlement। This policy is an illustration of the company concern for which major stakeholders। तो lenders, suppliers आएगा इसके अंदर, क्योंकि इनवॉइसेस जो है सप्लायर से ही रिसीव होते हैं। अच्छा जी, सो फार सो गुड। चलें जी, आगे देखते हैं हम लोग अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट एक्शंस टू रेज और लोअर टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्शंस टू रेज और लोअर द साइज ऑफ द मनी सप्लाई, गवर्नमेंट एक्शंस टू रेज और लोअर द अमाउंट इट स्पेंड्स। तो 1 और 3। बी, which two of the following statements are correct? Securitization is a conversion of liquid assets into marketable securities. Thus, the reverse yield gap refers to the equity yields being higher than debt yields. Disintermediation arises where borrowers deals directly when with lending individuals,
or demand pull inflation will occur when there are a increase in production costs independent to the state of demand. तो वन और थ्री यहाँ पे सही है, क्योंकि रिवर्स यील्ड गैप जो है वो यील्ड होता है डेट का जब ग्रेटर देन इक्विटीज होती है। स्टेटमेंट फोर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। अच्छा जी, 22 पे चलते हैं। Indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statements are true or false. Open bearing securities have a fixed maturity and a specified rate of interest. True है। In the discount, my funds are raised by issuing bills at a discount to their eventual redemption or maturity value. ये भी true है। आगे चलो। The principal objectives of macroeconomic policy include which of the following? अच्छा जी, full employment of resources, price stability, economic growth, or balancing the government budget। तो वन, टू और थ्री तीनों है। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, गवर्नमेंट हैव अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक टारगेट एज पार्ट ऑफ देयर फिस्कल पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्शंस रिलेट प्रीडोमिनेटली टू फिस्कल पॉलिसी? Decreasing interest rates in order to stimulate consumer spending, reducing taxation while maintaining public spending, or using official foreign currency reserve to buy the domestic currency। तो 24 का आ जाएगा वन और थ्री। Which three of the following are the key roles played by money markets? Uh, Providing short-term liquidity to companies, banks, and the public sector, सही है। Providing and short-term trade finance, सही है। Allowing an organization to manage exposure, foreign currency risk and interest rate risk, सही है। तीनों सही हैं। आगे चलें जी। Which of the following are the money market instruments? Certifications of deposits, corporate bond, commercial paper, or treasury bills। One, three, and four are the right answer। Which three of following are the common roles of the treasury function within a firm? शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सही है। लॉन्ग टर्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, सही है। लॉन्ग टर्म मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट शेयर, नहीं। रिस्क मैनेजमेंट, सो ए बी डी। Which of the following is the difference between primary and secondary capital markets? Primary capital markets relate to the sales of new securities, while secondary capital markets are where securities trade after their initial offering। So say A जो है वो itself सही आंसर है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो है वो रिलेट करती है सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटी। सेकेंडरी कैपिटल मार्केट जो है वो ट्रेड होती है आफ्टर इनिशियल ऑफरिंग। अच्छा जी। चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी विल इन्फ्लुएंस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? तो लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट्स, सही है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, सही है। लेवल ऑफ कस्टमर डिमांड, ये भी सही है। लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी सही है। तो डी आंसर आ जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू यूजुअली seen as form of market failure where regulation may be a solution? uh, Imperfect competition, सही है। social cost और externalities, सही है। और imperfect information, ये भी सही है। तो वन, टू एंड थ्री आर द राइट आंसर। ठीक है जी।